अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट के इस टॉपिक को आगाज़ किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रैशनल फॉर लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट है कि क्या रैशनल है, उसके पीछे आइडिया क्या है कि क्यों लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इन जनरल टर्म्स लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट that take place at the local level और local people उसको generate करते हैं, उसको initiate करते हैं, and is ideally initiated by the local level by local people. It is not essentially or ideally action that occurs at the local level as a result or flow on of central level planning and decision making. Social development is said to occur when local people collaborate. Social development जो है वो कब हम उसको सोशली डेवलप होते हैं, जबकि लोकल लोग जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी बॉन्ड्स एंड टू टेक रिगरस एक्शन टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं अपनी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, और वो लोकल लेवल पर स्टेप्स उठाते हैं। The philosophical base of local level social development is that local people, through their community structure, are enabled to assume responsibility for their own development. यानी लोग खुद responsibility लें कि उन्होंने अपने living conditions को जो है वो बेहतर करना है. The rationale for focusing directly on local level community development as set out in the above discussion is threefold. Development at this level is designed essentially for three purposes. ये आपको आगे तीन पर्पस हम डिस्कस करेंगे. To address years of neglect of development at the local level, usually reflected in extreme poverty and deprivation. Number 2, इसको हम बाद में one by one भी करेंगे, लेकिन अभी तीनों इकट्ठे पढ़ते हैं. To compensate for failures in development at the national level, and number 3, to prepare the local level for participation in further national level development, especially in terms of local level being able to take advantage of opportunities that are opening up. It is not unusual for local level development to have all three purposes in mind. However, differentiation between local level situation in terms of which of these purposes is predominant is also important. Undoubtedly, the most difficult situation is reflected in first purpose, जब जो years of neglect की बात की थी जहाँ पे. In that, initiatives to overcome years of development neglect will invariably be confronted with the realities of extreme poverty, low levels of personal self-esteem and confidence, and very little local organizational development. जब आप साल हर साल जो है वो कम्युनिटी की तरक्की की बात नहीं करते, लोकल लेवल की लोकल लोगों की तरक्की की बात नहीं करते, या उस एरिया की तरक्की की बात नहीं करते, तो उसका नतीजा क्या होता है कि उस कम्युनिटी में, उस लोकेलिटी में, उस एरिया में जो है वो एक्सट्रीम पावर्टी की सूरत में उसका रिजल्ट आपके सामने आता है. लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं, लोग वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी कम्युनिटीज़ में, दूसरी एरियाज़ में जाने लग जाते हैं. लोगों की जो सेल्फ एस्टीम है वो जो है वो बहुत हद तक लो हो जाती है. The second most difficult situation will tend to be where there is minimum national development of which the local level can take advantage. अच्छा, लोग कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं जब आपकी नेशनल लेवल के ऊपर तरक्की हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट आ रही होती है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं. तो अगर नेशनल लेवल के ऊपर ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे तो लोकल लेवल के जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है हम उसको कैसे कर सकते हैं. The third situation put forward, namely that of enabling a local level to take appropriate and significant advantage of potentially beneficial national level development, is the easiest to respond to, especially if it is possible to work simultaneously at the national level to ensure that it does understand and respond appropriately to the local level development need. In some situation, all three purposes are relevant reason for engaging in local level community development, and these are often both complex and extremely difficult situation for
इंटरवेंशन। तो लोकल लेवल डेवलपमेंट के जो 3 एम्स थे उनको आज हमने डिस्कस किया है। अगले लेक्चर्स में हम लोकल लेवल जो डेवलपमेंट है उसमें हम उनके गोल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।